Hi Vignesh Dada. Hello. मला सांगा, how did your journey at Newaj begin? Okay. Uh, so it's been 3 years with Newaj. और यहाँ पे अगर आप पीछे जाओ तो इट फॉल्स बिटवीन लॉकडाउन पीरियड, कोरोना पीरियड. मेरा 4th ईयर था एंड 4th ईयर के इसमें जब इंटर्नशिप अप्लाई करना था, सो आई अप्लाइड हियर. आई वॉज लिटिल बिट फेड अप ऑफ डूइंग ओनली द सुपर स्ट्रक्चर का वर्क एंड आई हैड एन इंटरेस्ट इन लैंडस्केप, सो आई अप्लाइड हियर. यहाँ पे आने के बाद अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो वर्क. उसके बाद मेजॉरिटी वॉट एवर वर्क वॉज देयर, इट वॉज ओनली, you can say, some activities that Newaj was taking. It was under Inc. as a cell which Newaj has, where they promote other landscape field architects and whatever they are doing and their interests. My whole internship, primary thing I did was only video editing. जब मैं मेरे कॉलेज में वापस गया एंड हमारा जूरी होता है ओवर देयर, हमें मालूम पड़ा कि सर, बेसिकली माय जूरर वाज एस्टोनिश्ड कि अरे यू वेंट टू लैंडस्केप फील्ड एंड वहाँ पे जाके तूने वीडियो एडिटिंग ही किया क्या. सो ही वाज आल्सो क्वाइट एस्टोनिश्ड, बट yes, he actually liked it so much कि अरे तूने जाके जेनेरिक काम नहीं किया, तूने जाके कोई स्किल सीख के आया. Won't believe, but मैंने वहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर किया था during that time because he actually liked that concept of that you learned something and you just didn't go and do कि वो एक गधा मजूरी वाला काम करके आया. So yes, from there, one other interesting thing that we did, that was just little bit post lockdown, and I graduated, I got the degree and I came back here. तभी टीम थोड़ा छोटा था and we were on recruiting, so resource management was the task. So I had one of my design leads under which whom I was working. We were too low on people or resources at that time, and हमको एक GFC करना था. So during that GFC, we tried to manage कि resource मिले, कि कोई कि CAD पे करके दे देगा, कोई CAD पे बना पाएगा, but at the end we didn't get and we didn't wait for the resource. And वो GFC मैंने and that DL, we both managed to do it by hand and on our tablets. We managed to do at least around 10-15 sheets with all the details and everything by hand, with all the revisions and everything. So that was a very different approach to how we do GFCs. So over here we don't wait for a good opportunity, we make the opportunity and we just moved ahead. If I'll just add up to that interesting fact कि there was this meeting. I had just prepared a presentation. That presentation was supposed to be given by sir or my DL, whoever that was at that time. But early morning, when the client has just approached, they are sitting and getting briefed in the conference. I got a call from my DL कि is the presentation ready, all okay? I said yes. Then he says okay, so now you present it, and I wasn't ready. I was wearing t-shirt, jeans and sneakers and everything whatnot, and I was like a little under prepared or underdressed for the meeting. I went to the washroom where I tucked in my t-shirt into my jeans. Fortunately I was wearing a belt and I had sneakers on unfortunately, but ठीक है. I went in. वहाँ पे जाने के बाद as soon as I opened the door, दरवाज़ा खोलते ही सारे क्लाइंट लोग बैठे. दे आर ऑल इन प्रॉपर फॉर्मल्स, दे आर ऑल वेयरिंग सूट्स एंड एवरीथिंग. मेन गाय और द हेड ऑफ द फर्म वाज वेयरिंग इन प्रॉपर सूट, टाई एंड एवरीथिंग. हैड हिज नोट पैड. आई डिडंट इवन हैड अ नोट पैड विद मी. मैं एक पेपर पे छोटे से मेरे पीपीटी के नोट्स लेके आया था. वहाँ जाके मैं शॉक. ऋषिकेश सर वाज आल्सो देयर इन दैट मीटिंग. और फिर ओके, आई जस्ट took on the meeting. The presentation was on point because the presentation was prepared thoughtfully and everything. Just that I was underdressed. And the funny thing was, वो T-shirt पे एक तो लिखा था limited service, and at the end
I guess the client also acknowledged कि oh you provide such good service and also winked at me at the same time. I controlled my laughter and everything, but we passed the meeting and it went very well. We got the project basically. That sounds absolutely hilarious. Moving on, what is the weirdest or most unexpected thing that happened to you on site? Something you can say कि we went on one of our sites. It's not a general residential site. It's a hill basically, forest. And we went, we as in me, Shalaka ma'am, and there is one more DL who is Napoleon. We went to the view site. So वो site कैसा है? It's a hill where one side बहुत steep है and one side बहुत चढ़ सकते हैं वहाँ से. And it was rainy season. So that project where it's located, it rains heavily as well as उसी टाइम पे गर्मी भी उतना ही रहता है, धूप भी उतना ही लगता है. इट्स बोथ. सो वो हमको पता नहीं था तभी, क्योंकि हम लोग जस्ट गए थे टू इन्वेस्टिगेट द साइट, चेक करना है. तो माउंटेन तक पहुंचे. वी सेड ओके, जो चढ़ना शुरू करते हैं. एंड इट स्टार्टेड रेनिंग. वी स्टिल ट्रैक थ्रू द माउंटेन. एक झाड़ पकड़ा, दूसरा झाड़ पकड़ा, ऊपर गए. वहाँ तक पहुँचने तक कुछ नहीं लगा. एवरीथिंग वाज कूल, ठंडा था. बारिश रुक गई. अब आना था नीचे. सो इट टुक अराउंड 30 मिनट्स 45 मिनट्स टू कम डाउन, whereas it took 2 घंटा ऊपर चढ़ने को. नीचे आए. वहाँ पे कुछ अट्रैक्शंस हैं. नीचे आने के बाद वी वर लिटिल टायर्ड. धूप थोड़ी आ गई थी बाहर और बारिश खत्म. We went to that attraction, 2-3 gardens that were there. We also investigated those gardens ki okay, as a case study. One thing I found when I was walking, जो रास्ते का asphalt रहता है, it had gone so hot over there कि वो asphalt मेरे shoes को चिपक रहा था and मेरे shoes के imprint वो asphalt में आने लग गए थे. We said that's weird, इतना गर्मी तो लग नहीं रहा है, दिख रहा है but लग नहीं रहा है, body को कुछ ऐसा feel नहीं हो रहा है. हम लोग पूरा घूमे साइड पे एंड वी गॉट बैक टू वेयर वी वर स्टेइंग फॉर दैट डे. आने के बाद दैट बेसिकली द अदर पर्सन whom I was with, which is Napoleon, he's a very fair guy. I saw him and he was all red. So we got blisters at the same time, but we didn't realize anything. So वो एरिया ऐसा है कि वो इतना गर्म हो जाता है कि you won't realize कि वो वहाँ पे इतना धूप है. You might just stroll around. याने मला लक्षात आलं, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ एनी ऑफिस आर द लंचेस. एनी मोमेंट्स दॅट मेड यू लाफ आउट लाऊड? सो ॲट न्यू आर्च एक आम्ही गेम खेळतो ॲट एव्हरी लंच ब्रेक. सो वॉट वी डू इज बेसिकली वी मेक टीम्स. द टीम इज whoever is Maharashtrian and whoever is from out of town or out of state. They give us a word. That word is from their own language, which none of us know or we even don't have any clue. आणि आम्ही पण त्यांना शब्द देतो मराठी. सो फॉर एक्झाम्पल गांडूळ असा आम्ही कधी कधी शब्द दिलेला. सो ट्राय टू गेस इट अँड दे आस्क इज इट अ व्हेजिटेबल, इज इट एडिबल, इज इट नॉन लिव्हिंग, असं करत अँड देन वी गिव्ह देम क्लूज अँड दे हॅव टू गेस इट. अँड तेवढ्या वेळात आमचं लंच होऊन जातो 1-2 वर्ड गेस करेपर्यंत. सो इट्स अ व्हेरी गुड एंटरटेनमेंट. वी हॅड वन राजस्थानी गर्ल. शी केम फ्रॉम जयपूर आय गेस. अँड तेव्हा असं झालं की तिने आम्हाला एक वर्ड दिला. दॅट वर्ड वॉज रूपा. सो आम्ही गेस करायला सुरू केलं काय आम्ही गेस अंडर गार्मेंट्स, ओव्हर गार्मेंट्स सगळं गेस करून झालं आमचं. अँड ॲट द एंड जेव्हा आम्हाला कोणाला कळलं नाही, आम्ही बेसिकली पास दिला, आम्ही हरलो तो गेम. बट तो वर्ड होता सिल्वर. की आम्हाला कळलं पण नाही. आमचा ब्रेक अर्धा तास एक्सटेंड झालेला. आम्हाला सर आणि HR सगळे असे बघतायत बाहेर ना, काय रे लोक अजून जेवतायत, हॅ चालू आहे. बट येस, न्यू आर्च मधले ब्रेक्स आर व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड we enjoy a lot, so it's inclusive basically.